Next, cellular organization. Gacha made of cells, animals made of cells, any living organism made of cells. So cellular organization. Cell is the simplest functional unit of an organism. Simplest, सबुठु simplest. सेल तल को तुम भांगी देले कौन एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड ऑल बाहर किंतु गोटे मॉलिक्यूल को मु धरिबी आ कहबी कि इट इज लिविंग नो सेम गोटे गोटे थ्रेशोल्ड लेवल से माने फॉर्म करिवे आउ दैट इंटरैक्टिव सेल्फ इंटरैक्टिव सिस्टम सेल्फ इंटरैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म ए सेल से सेल अच्छी माने लाइफ अच्छी मॉलिक्यूल अच्छी माने लाइफ नहीं ओके सेल अच्छी माने हमें कहबा इट इज हैविंग ए लाइफ बट जदि गोटे मॉलिक्यूलटा अच्छी मु कहबी ता माने मॉलिक्यूल लाइफ अच्छी बोली ग्यारंटी नहीं मॉलिक्यूल माने सेटा तुम केमिस्ट्री आड़े गला ओके केमिकल आड़े गला इट इज नॉट बायोकेमिकल सेल आसिला माने ही इट इज बायोकेमिकल सो प्लांट सेल एनिमल सेल all living organisms are composed of cells some are unicellular and others are multicellular unicellular तुम बैक्टीरिया टू आरंभ करके एमीबा पैरामेसियम्स यूक्लिना से माने गले तुमरो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टेंस ओके आ मल्टीसेलुलर वी ऑल हायर एनिमल्स एटा को तुम कहि पर लोअर ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर्स आ हायर आर मल्टीसेलुलर एंड आल्सो कॉम्प्लेक्स जेते मल्टी हेले सेते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी बढ़ी गला so unicellular organisms are capable of independent existence तांकर independent existence थाए and performing essential functions of life unicellular are capable of independent existence माने कोन multicellulars are organism is independent okay but multicellular माने no that is independent एटी ऑर्गेनिज्म को मीन करछि भल से बुझो यूनिसेलुलर माने गुटे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जहाँ गुटे ऑर्गेनिज्म ता बट मल्टीसेलुलर माने नुह मु एबे किछिटा सेल आनी के रखि देली ताको मु गुटे ऑर्गेनिज्म कहबी कि सपोज धर मु गुटे गोटे ऑस्टियोसाइट बोन सेल टे रखली गोटे हार्ट सेल टे रखली गोटे स्किन सेल टे जस्ट थोई देली इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करछि मु थोई देली ताले मु ताको ऑर्गेनिज्म कहबी कि ना सेल थोई देबाटा को ऑर्गेनिज्म से तो मल्टीसेलुलर ही गले ताले ऑर्गेनिज्म कि ना इट इज नॉट दैट गोटे ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट ओके किंतु मल्टीसेलुलर माने नुह कि से सेल रखी देले इंडिपेंडेंट बट यूनिसेलुलर रे कोन मु एमिबाटे गोटे रखी देली माने कोन तार लाइफ अछि सेटा गोटे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सो बुझो एबे ई सेंटेंस टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस and performing essential functions of life. Essential functions of life माने तम growth, development, metabolism, all this. Okay. So cell एटा तम कैटाबोलिकली बुझेछि गोटे ऑर्गेनिज्म को भांगी की बुझेछि मु तुमको अपग्रेडेशन प्रोसेस रे बुझौछि सेल टिश्यू बनेला ग्रुप ऑफ सेल्स interact together in such a way that they work in a coordinated manner and that is called as a tissue तांको निजो भितरे interactions अछि interaction न हेले no tissue can ever be formed or any other higher level of organization हे परिबो नाही so cell बनिला tissue रू बनिला तमरा organs रू organ system रू organism you know all this okay so anything less than a complete structure of a cell जोटा मु बतेली कि सेल को भांगिले मते कोन मिलिबो सब सेलुलर लेवल मिलिबो मॉलिक्यूल्स मिलिबो एटम्स मिलिबो सो दोज आर नॉट दे डोंट एन्श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग सेल अछि माने तमे इंडिपेंडेंट लिविंग एक्सपेक्ट करि परिबो जोटा कि यूनिसेलुलर बट मॉलिक्यूल रखि देला माने नो कि सेटा गोटे लिविंग रे जीव हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल माने कोन गोटे सेल रखी ही ऑर्गेनिजम्स बने एग्रीगेशन हे इंटरैक्शन हे ग्रुप रे काम करी ही गोटे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बने सो दैट इज योर स्ट्रक्चरल आ फंक्शनल मिसी की काम करंती काम सेल ही काम करे ग्राउंड लेवल को देखिए माने अल्टीमेटली के काम करछि तुम सेल्स ही काम करछि सो फंक्शनल यूनिट ओके यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and that is again a defining feature of living organisms.
मु सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कहली सेल कहली माने तो लाइफ दैट इज सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर रे सेटा गला सो इट इज द डिफाइनिंग फीचर नेक्स्ट कॉन्शियसनेस एटी देख हैव अ लुक कौन होउची this is blossoming opening up तम स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओके नेक्स्ट मंकी टे मिरर देखुची तमर एटा कोन कार्निवोरस प्लांट दिस इज ए कार्निवोरस प्लांट एटा कोन मीन करछि तुम बुझी परछ वेनस फ्लाई ट्रैप आगो को पड़िबो वेनस फ्लाई ट्रैप एटा दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट को ट्रैप कर देला ओके एटा बेसिकली कोठिबे नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज एरियाज रे दे ग्रो कहीं कारण जेहेतु नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एरिया दे ग्रो दे एक्वायर द नाइट्रोजन बाय यूजिंग द कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म एनिमल्स टू से एनिमल्स को डिग्रेड करंती एंड दे कंज्यूम दिस इज योर टच मी नॉट प्लांट फेमस सो कॉन्शियसनेस माने कोन दिस आर रेस्पोंडिंग टू स्टिमुली दे आर सेंसिटिव एवरी दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेंसिटिव टू माय टच ओके सो दैट इज सेंसिटिवनेस तो सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स टू स्टिमुली माने तुम सेठू कौन आसे यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग यू नो व्हाट इज इन एंड अराउंड यू सो ये कॉन्शियसनेस एबे जेमति मंकीटे मिरर देखुची माने कोन से किछ गोटे परसीव करूची कि आउट मंकी अछि कि मु निजको कि देखुची समथिंग इट इज एनालाइजिंग समथिंग इज इट विजुअलाइजिंग सो ए स्टिमुलस एटा गोटे स्टिमुलस गला ताको सो ए स्टिमुलस इज ए important feature of a living organism and देखो it is the ability of organisms to sense their environment and respond to external environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc. Any environmental stimuli can be any abiotic stuffs. Abiotic माने जो biological नुहो abiotic माने तो light, water, anything. Okay? कि abiotic है other organism गोटे मंकीटे आउ गोटे मंकी को देखिकी भी रेस्पॉन्ड करे राइट सो गोटे प्लांट आउ गोटे प्लांट को भी देखिकी रेस्पॉन्ड करे सो आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को एनीथिंग तमे निज छड़ा आउ कहा को भी किछि भी देखिकी किछि भी गोटे स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करूछ दैट इज योर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और एनी डायरेक्शनल तमे भलो रेस्पॉन्स दे खराब रेस्पॉन्स दे बट दैट अगेन देन अगेन इट इज ऑलवेज अ रेस्पॉन्स ओके सो दैट इज सेंसिटिविटी So all organisms are aware of their surroundings. They are aware. जानी चंदी कौन अच्छी तंकर inner and around रे. So it is the defining property of living organism. जेहेतु they are always aware of it. So we call consciousness as a defining property of living organism. However, there is one exception. Humans are the only organisms having सेल्फ कॉन्शियसनेस रेस्ट ह्यूमन्स छाड़ी की अलगा कौन सी ऑर्गेनिजम्स रो कॉन्शियसनेस सेल्फ नहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस माने एठी व्हाट यू मीन गोटे ह्यूमन एबे यू आर कॉन्शियस कि मु एबे केमिति लिखुची आई एम टेकिंग ए क्लास तमे यू आर टेकिंग डाउन नोट्स सो यू आर कॉन्शियस ऑफ हाउ योर हैंडराइटिंग इज you are conscious of if you are hungry or not you are conscious कि तुम पेट काटुची कि मुंड दुखुची you are always conscious about yourself तुम सब बेले जानिछ कि बाहर तो जा होची you are responding to that but you are also responding to what is also happening within you okay that is called as self consciousness निज भितर जहाँ भी होची भलो खराब जहाँ भी होची तुमरो cellular activities तमर भोक कला तमे जानुचो and all okay so every this sorts of all these kinds of features जोटा तमे निजे perceive करि पारछो निज भितरे perceive करि पारछो that is called as your self consciousness and in this entire world only humans are the living organisms who are self conscious rest other organisms they don't have their they have consciousness किंतु self consciousness सेवन करो ना okay so etu we conclude that consciousness is a defining property of living organisms okay so ethi dekho tama boy ra gote part lekha hichi coma patients to taku tame living re purebo ki nahi okay so ethi gote jinse dekho coma patients are by default they are living kintu semane jo coma को जाई चंती कोमा को गले माने नो दे आर नॉन लिविंग की ऑल
कोमा को जाइछन्ति ड्यू टू सम किछि गोटे एक्सीडेंट हेछि किछि गोटे इंजुरी हेछि समथिंग हैज हैपेंड for that reason they have entered into their coma stage, right? But they were all previously living organisms only, living hi thile. Okay, so say part re tomar question achi, is a coma patient living or non living, and your answer is they are no doubt living organisms. So consciousness is a defining property of living organisms. Next property देखो एटा specifically नहीं देखो homeostasis. Stasis माने static. Okay, homeostasis माने देखो ये कौन करछि, he is trying to maintain balance on a string of rope. Homeostasis माने simple definition, if an organism is able to adjust itself internally in response to changing external conditions, निज बॉडी को इंटरनली मेंटेन करि पारछि बाहर जहाँ भी कंडीशन था, बाहर गरम होची बट वी आर मेंटेनिंग आवर ओन बॉडी टेम्परेचर, बाहर ठंडा होची फ्रीजिंग टेम्परेचर अच्छी बट देन अगेन वी आर मेंटेनिंग आवर ओन बॉडी टेम्परेचर. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमियोस्टैसिस. होमियोस्टैसिस माने you maintain your equilibrium, you maintain your body equilibrium, internal body equilibrium in respect of with respect to changes in the external stimuli or external condition. बाहर any type of situation था तमे निजको internally ठीक रे maintain करि पारछो, that is called your homeostasis. Okay, so polar bear example एटी कहीं देछि, एटा तो बुझलो ठीक अछि, जतले गरम होउची बाहर बहुत गरम होउची we sweat and that is how we maintain our body temperature. बाहर ठंडा होउची we shiver, shivering हेले heat production है body भितरु, muscles contraction है heat production है, so that is how we maintain our normal body temperature, so that is homeostasis. But polar bear एटी कहीं देछि, polar bear freezing conditions से रहउची, so in what way it maintains its homeostasis? For in its body. Okay, so anywhere the organism is, they always maintain their homeostasis. Evolution, adaptation कले ही इवॉल्व हे परिबो, जदि गोटे जिंस को एडाप्ट करूनो माने कोन तमे इवॉल्व हे परिबोनी. ओके, सो डार्विन कांसेप्ट कोन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने इटी कोन, फिटेस्ट माने इट इज एबल टू एडाप्ट टू एनी चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो एडाप्टेशन रु तमर हुए इवोल्यूशन. सो इटी कोन देखुछ कि आगो दिस इज ए फ्लैट टेल्ड हॉर्न्ड लिजर्ड. ओके, this lizard exhibits a flattened body and coloring. Color टा देखो भल से देखो, coloring टा background संगे match ही जाउची, right? Coloring that helps camouflage it, both of which are adaptive traits that help it to avoid predators. Okay, so this particular organisms, in the course of history there are many organisms. ये जदि suppose एबे गोटे red color थांता कि green color थांता तो या predators या को easily देखिकी कैच करिकी खाई परदंते, राइट? बट एबे कोन ये माटी संगे मिसी जाइछि, त निज बॉडी कलर को एमिति बनेला कि से निज माटी संगे मिसी जाइछि, तो इट इज नॉट इजीली विजुअलाइजेबल. ताको तमे इज विजुअली डिस्क्रिमिनेट एते इजीली करि पारु न, त माने कोन इट सेफ फॉर हिम, ता पई भलो, ता प्रेडेटर्स पई भलो नो, कारण से माने इजीली आइडेंटिफाई करि पारियनि कि एठी किछि अछि कि नै, बट ता पई भलो. सो जेहेतु ता पई भलो, इट एडाप्टेड टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इट इवॉल्वड. इवॉल्व कौन, कैमोफ्लेज कला. कैमोफ्लेज माने कौन, निज कैमोफ्लेज माने हला निज सराउंडिंग कलर को निजे एक्वायर करिवाटा. ओके, सो इवोल्यूशन. सो these are the essential properties of living organisms that we discussed: growth, reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness. Growth और reproduction हेले कौन तमरा not the defining properties, non-defining properties, and metabolism, cellular organization, consciousness हेले कौन तमरा defining properties. Okay.